Our top lead this evening, ladies and gentlemen, is a video that is a telling commentary on the arrogance of India's political class. Here is a man accused by India's top wrestlers of harassment, stalking and molestation. Here is a man who, after much public pressure, is charge-sheeted by the Delhi police. Here is a man who the Delhi police now says is liable to be punished. Here is a man who has been shamelessly protected for the last 6 months. And here he is, arrogant and outraged when asked why he isn't resigning on moral grounds. Ladies and gentlemen, bullies are drunk on power. They think they can silence people with their bluster. But Brij Bhushan Singh probably didn't realize what he was against. He was against India's champions. And today, he was pitted against a young reporter from the Times Network who asked him questions he didn't want to hear or answer. So he did what he tried to do with the wrestlers. Silence her. It didn't work. Take a look. So Brij Bhushan Singh Saran has arrived at the Delhi airport. We'll try to ask question to him. सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक। So this was Brij Bhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media personals, and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner, and that is what the Brij Bhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner. When we tried to ask the question, we tried to ask him that why is he not resigning. We tried to ask him that on what moral grounds on the sitting position as an MP. We tried to ask him that how will he put forward his point of view on July 18 when court has summoned him. Ladies and gentlemen, was that or was that not a valid question to ask? Why aren't you resigning? Today there is a charge sheet that has been filed in court that is finding you liable for punishment. It's a valid question that was asked by that young reporter there. Her name is Tejshri. Did you see how that man drunk on power behaved? For the last 6 months, he has been pushed to a corner. He's been defiant. He's on the mat. Yet his party has protected him enough for him not to be pushed into giving that resignation. Is there any good reason why this man on your screens hasn't been sacked? It was a question to be asked, a legitimate question that any journalist worth their salt would ask. It's what Tejshri did. I again want you to see how this man on your screens responded to that young reporter. So Brij Bhushan Singh Saran has arrived at the Delhi airport. We'll try to ask question to him. सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे
mic. So this was Brij Bhushan Sharan Singh, who just misbehaved with the media personals, and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner, and that is what the Brij Bhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner. When we tried to ask the question, we tried to ask him that why is he not resigning. We tried to ask him that on what moral grounds he is still on the sitting position as an MP. We tried to ask him that how will he put forward his point of view on July 18 when court has summoned him. Now, this has come on a day that has been particularly bad for the former WFI chief. For 6 months, protesting Indian wrestlers sat on the roads of Delhi demanding action against Brij Bhushan Sharan Singh. After dragging its feet, the Delhi police has finally submitted its charge sheet to the court. And though late, the charge sheet is both detailed and strong. Let's put the pointers out on our screens. The Delhi police charge sheet is alleging that Brij Bhushan Sharan Singh had on various occasions molested, stalked, and harassed wrestlers. It says, based on the investigation so far of the complaints by 6 top wrestlers, Singh is liable to be punished. In the charge sheet, the Delhi police has requested the court to summon both Singh and the witnesses. It details that the investigators spoke to 108 witnesses, 15 of whom corroborated the allegations against Brij Bhushan Singh. The witnesses include wrestlers, coaches, and referees. Just to go back to the beginning, the wrestlers in their complaints have alleged 15 incidents of sexual harassment that include 10 episodes of inappropriate touching, several instances of intimidation and stalking as well. As we said, the 1,000-plus page Delhi police charge sheet is detailed and exhaustive. It builds the case with individual allegations of the wrestlers. Each allegation is then corroborated with witness accounts. The allegations are shocking, and if proven, what the wrestlers faced was very, very disgusting and disturbing. I'm quoting from the charge sheet now. One of these wrestlers has told the police, and I quote, "Singh called me to his dinner table, placed his hand on my breast, groped me, and then slid his hand down to my stomach 3 or 4 times. It's very uncomfortable for us to hear. Some of you watching are feeling uncomfortable. But this is what has happened. This is the truth. It needs to be put out. Just imagine if you are finding it uncomfortable to hear what the women wrestlers would have felt while undergoing this harassment. For their sakes, listen, because they are people who have given your country medals. Another wrestler referred to as wrestler 2 in this charge sheet, and we are not naming them, we are not naming anyone, alleged, and I quote again, "Without seeking my permission, he pulled my t-shirt, placed his hand on my breast, and slid it down my stomach on the pretext of checking my breathing." These are accounts of some of the best sports persons in this country, those whom we train, those who represent India on the global stage, and those who win medals and glory for this country. Now, the Indian Express reports that in an annexure to the charge sheet, the Delhi police mentions that Brij Bhushan Sharan Singh has denied all these allegations. He's claimed he had never met the wrestlers and didn't even have their phone numbers. The wrestlers' protest began in January this year. In February, the wrestlers had deposed before their oversight committee that was set up by the government of India. Do you remember this? It was headed by Mary Kom. They have consistently made the same allegation during the protests on television and to this oversight committee in July that was appointed by the government. Now, the Delhi police charge sheet is finding some basis in these charges. I'm not saying the charges have been proved, but I'm saying that the Delhi police, after its investigation and speaking to various wrestlers and eyewitnesses, is finding basis in some of those charges. Yet the oversight committee
appointed by the government of India, headed by Mary Com, did not raise a single red flag or recommend police action in its report submitted to the Sports Ministry in April. It was absolutely quiet on the charges against Brij Bhushan Sharan Singh. If they believed that Brij Bhushan Sharan Singh was not guilty, why did they not say it? And if they believed he was guilty, again, why did they not say it? Why did they not recommend a police probe? That 6-member committee was led by former boxing world champion Mary Com. The wrestlers returned to their protest venue, Jantar Mantar in Delhi, due to lack of action after the committee's report was submitted. Let me go across to my guests who are joining me this evening. We have Rakesh Singh, who's the General Secretary of the Haryana Wrestling Association, who's speaking on behalf of Mr. Brij Bhushan Sharan Singh. We have Jagwati Sangwan, who's trying to accommodate her camera, so we'll give her a couple of minutes for that. She's a former volleyball player. Jagwati ji, take your time, fix your camera, and we'll come to you. Yashovardhan Azad is a former IPS officer who's joining us on the broadcast. Mr. Azad, I just want to start with you and ask you, before I go to the charge sheet, what do you make of Brij Bhushan Sharan Singh's absolute arrogant behavior when it came to dealing with a young reporter? She's asking him questions that any journalist worth their salt will ask. भैया आप resign क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो charge sheet भी आ गई है आपके खिलाफ. And the Delhi police is saying, based on their investigation so far, this man is liable to be punished. Well, his behavior is quite an eloquent expression of what he feels about this entire exercise. It's really unfortunate that people in such positions, the way they behave with the press, and especially when they are charged with such offenses. So I would certainly say that this thus speaks volumes of the way this entire exercise has been conducted. You know, we were talking on your show only how this man should have been arrested because, you know, with POXO Act or with these act against, for offenses against women, there should be an arrest, but he has not been arrested. And by the way, I want to also tell you that 12th June, the charge sheet has been filed. And now the date has been given for appearance in the court, 18th of July. But there are many things, Shreya, which still need to be done, which we'll, of course, talk later. But about his behavior, I think it's pretty clear that that has been stand of his right through, that are not to be blamed. And that's why his arrogance is very, very evident on your screen. Okay. So the charge sheet, the sections under which he's been booked are on our screens right now. And Rakesh Singh ji, you are joining us as well. आप General Secretary हैं हरियाणा Wrestling Association के. राकेश सिंह जी, आप मुझे एक बात बताइए. There is something called propriety in public life. ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जो allegations हैं, वो बहुत गंभीर हैं. They have not been proven, लेकिन वो बहुत गंभीर हैं. अब दिल्ली पुलिस की एक चार्ज शीट भी है. आप मुझको बताइए, क्यों कोई, फॉरगेट अ रिपोर्टर, क्यों कोई ब्रिज भूषण शरण सिंह से यह सवाल ना पूछे कि आपने रिजाइन क्यों नहीं किया है? सवाल तो बनता है ना. नहीं, किस चीज का रिजाइन मांग रहे हैं वो? कौन सा पद है उनके पास जो रिजाइन देंगे वो? ये जरा क्लियर करें. क्या वो सांसद पद से रिजाइन दें या WFI के जो चेयरमैन थे उस? हाँ, MP है ना. MP तो रहेंगे. वो MP पहलवानों ने नहीं बनाया, जनता ने बनाया. हाँ, नहीं, WFI के तो वो और 20 लाख लोगों ने वोट डाल के उसको बनाया है. किसी के रहमे करम से नहीं बने हैं वो. और ये बार बार 6 महीने से रिजाइन दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है. और मेंटली हरासमेंट इतना हो चुके हैं वो कि एक बार मुझे लगता है कि 6 महीने में 1 लाख बार उन्होंने यही बात सुनी होगी, रिजाइन दीजिए. ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट जमा की है और स्वागत है. और जो कोर्ट फैसला देगी उसको वो शुरू से कहते आए हैं, मैं गिल्टी हूंगा तो मैं फांसी खाऊंगा और गिल्टी होगा तो सजा पाऊंगा. तो कोर्ट पे छोड़ दीजिए. इस बात पे आप उसका रिजाइन बार बार मांग रहे हैं. अरे 20 लाख लोगों ने वोट दिया है, वो किसी के रहमो करम पर नहीं बने हैं. 7 बार के सांसद है. बार बार उसको कितना टॉर्चर किया गया है. आदमी मेंटली हरासमेंट भी हो सकता है. और गुस्से में आना, मुझे नहीं लगता कि वो आज किस उसमें आए होंगे या कोई पब्लिक की कोई बात होगी. तो हो सकता है वो गुस्सा उस बेटी को किया.
लेकिन उनका ये मंशा नहीं है। आप उनसे कभी मिलके देखिए, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन लोगों ने उसको पता नहीं क्या टारगेट किया। और हमारे यहाँ तो ये रोज इंसिडेंट हो रहे हैं, रोज ही झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जिस दिन कोर्ट उसको गिल्टी देगी वो सजा पाने के लिए तैयार है। मना कब किया है? सबसे पहले जो आदमी कह दे मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अब उससे सच्चा आदमी और क्या इस देश में है कोई? जी नहीं नहीं, ऐसा है ना राकेश सिंह जी, हमारे देश के नेता बड़े महान हैं, कुछ भी बोलते हैं। जी एक मिनट, हमारे देश के नेता एक तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी बातों का तो देखिए हम लोग कोई भरोसा नहीं करते हैं। वो ब्रिज भूषण शरण सिंह जी हो या कोई और भी हो, नेताओं का हम लोग भरोसा नहीं करते, जनता भरोसा नहीं करती। वोट करना पड़ता है क्योंकि चलानी है सरकार, डेमोक्रेसी चलनी है तो हमें वोट करना पड़ेगा, लेकिन भरोसा हम लोग नेताओं का नहीं करते सबसे पहले। आप दूसरी बात राकेश सिंह जी बोल रहे हैं कि ये बड़ा मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है ब्रिज भूषण शरण सिंह के साथ। ये मेंटल हैरेसमेंट उनके साथ हो रहा है या उनके साथ हो रहा है जो 6 महीने से सड़कों पे पड़े हुए हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारी बात सुन तो लो। हैरेसमेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ हुआ है या उन 6 लड़कियों के साथ हुआ है जो कह रहे हैं मॉलेस्टेशन हुआ है, स्टॉकिंग हुई है, और कह ही नहीं रहे हैं सब। अभी चार्जशीट भी दाखिल हो गई है जिसमें दिल्ली पुलिस कह रही है हाँ ऐसे लोग 15 सामने आए हैं जो कॉरबोरेट कर रहे हैं इन लड़कियों का जो कहना है। 15 लोग वो हैं जो धरने में साथ बैठे थे और वो सारी प्लानिंग के तहत आए हुए लोग हैं, जो कि 200 आदमियों ने बयान दिए हैं। उनमें से 15 ही लोगों ने इनके खिलाफ जो बयान दिया है वो सब इनसे कॉर्पोरेटेड हैं और सभी इनके एक जो बनाई है इन्होंने टीम कि हम इस नेता को उतार के और खुद कब्जा करेंगे फेडरेशन पे, और कुश्ती का तो उन्होंने सत्यानाश कर ही दिया। हमारे जूनियर बच्चे जो हैं हिंदुस्तान के जो आने वाली एक प्योद लगाई थी, माँ बाप ने एक सपना देखा था, वो तो उन्होंने जीरो ही कर दिए। आज वो विदेश चले गए हैं और वो जो वे कहते हैं और डीजी साईं वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है देश का। आज कितने स्कैंडल जो लड़कियां कर रही हैं, ये लड़कियां सच्ची होगी तो कोर्ट पनिश करेगी, अगर ये झूठी होंगी एक गैंग है इनका पूरा। और ये जितने भी कोच और रेफरी हैं ये 10 साल से वहीं घूमते थे, वहीं फॉरेन टीम लेके जाते थे, वहीं इनके कोच रहे हैं। पिताजी में बहुत ज्यादा वो लग गया कि ये तो भाई जालिम है, अत्याचार कर दिया। ये लड़कियां भी वहीं रहती थी, लेकिन इनकी मनसा थी फेडरेशन पे कब्जा करना और कुश्ती में ट्रायल ना देना। वो इनकी मनसा सामने भी आ गई है, तो ये तो जग जाहिर है। और कुछ दिन में दिल्ली पुलिस जल्दी से, ये तो फास्ट ट्रैक है, 6 महीने में फैसला हो जाएगा, तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कौन फाल्टी है कौन नहीं है। जो कोर्ट सजा देगी ब्रिजभूषण को मंजूर है। Jagmati ji, Jagmati Sangwan, you're a former volleyball player. Will you respond to, to what Rakesh Singh ji is saying? Okay, we'll try and go across to Jagmati Sangwan. Essentially, Jagmati ji, if you're through, I want to ask you what you make of what Rakesh Singh ji is saying. He's essentially saying it is not the women wrestlers who are being harassed. All right, it is not that women wrestlers are being harassed. Instead, it is Brij Bhushan Sharan Singh who is being harassed. Yashovardhan Azad, would you want to come in here? I mean, the defiance for the last 6 months is quite stunning to me. That despite the grave charges, despite the charge sheet, there has been a certain brazenness, a certain ahankar that says, that I'll pull through. Where is this arrogance? Where is this arrogance coming from? Is it coming from the fact that his party continues to back him? I mean, such grave charges made by women wrestlers who won this country, gold medals abroad, and yet you have a party that has refused to sack this man. Let me remind you, Shreya, that when this incident happened, when the complaint took place, and it was taken into cognizance by the entire country that such a complaint has been filed, that was the time when he, as a president, should have immediately resigned. He was still the federation. Anywhere in the world, if there are grave charges like this made against any gentleman, he must resign before he's proven not guilty in the court. That is number one. Number two, let us go through the entire series of incidents, and I need not recount them, when he was clearly helped by both the police and by not filing the charge sheet, etc., etc. But even now, I'm telling you,
The end is not near. We have not been successful at all for the simple reason that it is for the prosecution to ask for this trial to be speedily heard, to be heard constantly. Number two. Number three, it should go to some people should go to the High Court for monitoring the investigation for the simple reason that you need very, very able prosecutors for this. Because till now, till the framing of charges, there is a risk also. There should be witness protection. There should be special prosecution saying that his arrest is important because he might influence the case. And therefore, it is very, very important to see that the case goes to its logical conclusion. As regards the questions we have been asked to this gentleman, is absolutely right. On one hand, he's saying that the court will give the judgment. Then how is he saying that these wrestlers have planned all this? That will also come out in the court. So how can you make allegation against one side and say that the other side is awfully free? You've already given a judgment in this case, and that's very, very unfair. So therefore, I would say there are still a lot of things to be done in this particular case. The charge sheet has been filed, but we have to wait for the framing of the charges. We have to hear what happens to the accused, whether the court commits him to judicial custody or not, which is very, very important, because that gives the signal that these witnesses and these people who are the complainants can give free statements in the court. And that's why I think that the women organizations, and I would request Jagmati ji, that women's organizations and the civil society should go to the High Court and say that it should be, these are the things which need to be monitored, and suo motu action should be taken by the High Court on this. And lastly, even that POXO case should not be withdrawn because only High Court has the powers, because the Delhi police did not have a right to do that. You know, Jagmati ji, you're online with us, and thank God your network is now through. लेकिन मैं आपको बता दूं what Rakesh Singh ji, who's on the panel supporting Brij Bhushan Sharan Singh, is saying. He's saying, कौन सा इस्तीफा, क्यों इस्तीफा दें? 20 लाख लोगों ने जिसको चुन के भेजा है, कुछ लोगों से कहने से क्या इस्तीफा दे दिया जाएगा? He's also saying that this is mental harassment of Brij Bhushan Sharan Singh, that you keep asking him for an istifa. And if you keep asking him for an istifa, obviously he will snap like he did today with our reporter. How would you respond to him? Matlab, to me, this is completely brazen that Brij Bhushan Sharan Singh, and someone who's speaking on behalf of Brij Bhushan Sharan Singh, is saying that he is the one being mentally harassed, given the charges against him. Yes, first of all, Shreya, I severely condemn today's behavior of Brij Bhushan Singh, how he has responded to media women-tashiri. It's really shameful, and it also indicates the arrogance and the behavior of this person, Bahubali, as he has been called. He has been showing his Bahubal everywhere. In so many incidents, there has been discrimination against these Olympian wrestlers of our country. First of all, when they reported the whole thing to the Prime Minister of this country, he said there will be a call from the Sports Minister office to you. Till date, there is no call. Then a committee, oversight committee of Indian Olympic Association, and one from the Sports Ministry. There were two committees constituted, and the girls were there in front of the two committees. But they gave their report quite late, after 4 months, and on the sexual harassment issue, there is nothing. Then the Delhi police, they denied FIR to these Olympians. Now, at least the charge sheet has been filed, and the lower court has summoned Brij Bhushan on 18th. But what this all process indicates, it strongly indicates that women of this country
those who were told by the present party that बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ बीजेपी सरकार, they have literally zero commitment towards women and their sexual harassment at Okay. workplace. And at the same time, the judiciary here has also राकेश सिंह taken जी, more than a month. ठीक है, The charge sheet was filed by the Delhi police on 13th of नहीं, June. दैट इज ट्रू. देखिए Today जगमती जी, is- देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. एक मिनट जगमती जी, जस्ट अ मिनट. वी नो ऑल दोज डिटेल्स, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू पॉइंट आउट टू द फैक्ट दैट द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ड्रैग्ड इट्स फीट, the IOA dragged its feet, the Delhi police dragged its feet. You're completely right when you say that. Rakesh Singh ji, fact is that there can only be two scenarios. या तो लड़कियां झूठ बोल रही हैं या ब्रिजभूषण शरण सिंह झूठ बोल रहे हैं. इस पूरे केस में सिर्फ दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, राइट राकेश सिंह जी? तीसरा सिनेरियो नहीं हो सकता है. आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरे सवाल तो पूछ लीजिए, सवाल पूछने दीजिए. आप मुझको ये बताइए कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के हाथ बिल्कुल साफ थे और उनके अगेंस्ट एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं था, और अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लगता कि वो बिल्कुल गंगा की तरह पाक साफ हैं, तो क्या जो ओवरसाइट कमेटी बनी थी वो ये कहती नहीं कि ब्रिजभूषण सिंह शरण, हमने सारी लड़कियों से बात कर रही है, हमें उनकी बातों में कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह बिल्कुल पाक साफ हैं, इन पे कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए, इन पे कोई भी पुलिस केस ना किया जाए. लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अपनी ओवरसाइट कमेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको क्लीन चिट नहीं दी, उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं. ऐसा आपको लगता है क्यों हुआ? देखिए, अगर वो एकदम की तो इन्होंने सुनी नहीं ना, निर्दोष है जैसे कि आप कह रहे हैं. नहीं, लंबा ये ब्रिजभूषण का तो वहां प्रेशर है नहीं. डीजी साईं ब्रिजभूषण के हमेशा ही खिलाफ रहे हैं, और वो जो है आपके जो भी वहां पे 6 लोग थे, जिसमें ओलंपियन पहलवान, ओलंपियन मैरी कॉम, ये थे सारे लोग, और इन्होंने अपनी जो है वो लेट क्यों की वो तो देखिए आपका स्पोर्ट्स मंत्रालय जाने. लेकिन वहां ब्रिजभूषण ने किसी को टॉर्चर किया हो, किसी से बात की हो, या उसमें बाधा डाली हो, इन लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं. रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे और कोर्ट फैसला देगा, दोनों के तथ्य जान लेगा. 200 आदमी ने अपने बयान दिए हैं, उसमें से 15 आदमी खिलाफ हैं. वो लोग खिलाफ हैं जो धरने में साथ बैठे थे, जो इनकी मुहिम में शामिल थे, जो लोग इसका बेनिफिट उठाना चाहते थे, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, जो अपनी मनमानी कुश्ती में चलाना चाहते थे. ये लोग ठीक है, वो हमारी बेटियां हिंदुस्तान की शान रही हैं, उन्होंने हमारे देश का बहुत नाम रोशन किया है. अगर वो सही हैं, अगर वो अपने वहां खरी उतरती हैं कोर्ट में जज के सामने, तो उनको गिल्टी हो जाएगा, सजा हो जाएगी, तो ब्रिजभूषण भुगतेगा उस बात को. लेकिन आज पहले ही उसको अब 6 महीने से उसको टॉर्चर किया जा रहा है. आप गिल्टी हैं, आप गिल्टी हैं, आप रिजाइन दीजिए. तो ये तो एक इंसान की हद भी तो होती है ना. 6 महीने एक बात को 1 लाख बार सुनेगा, उसके पोता पोती भी है, उसका समाज भी है, उसका इतना बड़ा समाज है, इतने उसके लोग फॉलोवर हैं, तो आज वो किस किस को जाके बताएगा कि मैं निर्दोष हूं. अगर सजा होगी देश में, फिर ये आपके चैनल वाले हाहाकार मचाएंगे, सजा होगी. जिधर बरी होगा क्या फिर बोलेंगे आप लोग? कोई नहीं बोलता. अच्छाई को लोग दिखाते नहीं है, बुराई को बार बार दिखाते हैं. इसलिए मैं कहूंगा कि इन पहलवानों को अब कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, और हमारे समाज को भी कोर्ट पर भरोसा है. हमारा देश न्याय से चलता है, वो उससे बाहर ब्रिजभूषण शरण नहीं जा रहे हैं, और वो पूरा सपोर्ट करेंगे उसको, और पूरी पुलिस को सपोर्ट किया है, और वो अपना एविडेंस खुद रखेंगे, वो अपना साबित करेंगे मैं निर्दोष हूं, पहलवान साबित करें कि ये वो. जी राकेश सिंह जी, है ना, आपने एक बात पूछी और आप एक बात बोल रहे हैं. एक आदमी की सुन के सजा कैसे दे सकते हैं? जी नहीं, ऑप्शन इस बात का नहीं है कि आप पुलिस के पास जाएं और कोर्ट के पास जाएं. अब तो मामला हाथ से निकल चुका है एज इट वर. मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूं, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं बार बार कि क्यों रिजाइन करें. 20 हाँ नहीं, आप मुझे पूछ रहे हैं क्यों रिजाइन करें. 20 लाख लोगों ने उनको वोट दिया. हाँ, बताओ रिजाइन क्यों करें. देखिए ऐसा है कि बीजेपी के एमपी हैं ना, एक सुनिए, बीजेपी के एमपी हैं ना, वो उत्तर प्रदेश ने उनको बाहुबली बोलते हैं, होंगे बाहुबली वो अपने घर में, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मेरे को मतलब नहीं है वो बाहुबली हैं या नहीं है. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी की सरकार है सेंटर में, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में.
ही इज एन इन्फ्लुएंशियल मैन। लड़कियों ने पहले आकर, रेसलर्स ने पहले आकर बोला है कि ये या तो डरा धमका रहे हैं हम लोगों को, बाहर खुले हुए हैं इसलिए या तो डरा धमका रहे हैं हम लोगों को, प्रेशर डाल रहे हैं हम लोगों पे जो लड़कियां हैं 6, और कुछ लोगों को पैसे भी ऑफर किए हैं कि आप पैसे लीजिए और अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए। जब आप रेजिग्नेशन और अरेस्ट की बात करते हैं, आप रेजिग्नेशन और अरेस्ट की बात इसलिए करते हैं ताकि लड़कियों पे कोई या उनके परिवारों पे कोई दबाव ना बना सके। और एलिगेशन ये है कि ब्रिज भूषण शरण सिंह वो दबाव बना रहे हैं। ये लड़कियां सारी हरियाणा की हैं, हरियाणा में मुकदमा दर्ज कराते, 0 एफआईआर कहीं भी हो सकती है। अब विदेश का जो मामला है वो दिल्ली पुलिस उसकी जांच कैसे कर सकती है, ये हमारा कानून ही नहीं कहता। जहां इंसिडेंट हुआ वहां मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वहीं जांच जानी चाहिए, ये हमारा कानून कहता, मैं नहीं कहता। लेकिन इन्होंने दिल्ली बैठ के जंतर मंतर पर पूरी एक प्लानिंग के तहत इसमें इंडस्ट्री जी सवाल क्या पूछा मैंने आपसे? सवाल बड़ा सिंपल पूछा है। हाँ, ही इज अ मैन ऑफ पावर। सरकार उनके साथ है, सरकार उनकी है। लड़कियां कह रही हैं ये जब तक रहेंगे बात ही नहीं है। एमपी कानून जब तक इनको ये प्रोटेक्शन रहेगा, ये धमकाएंगे, हमें धमका रहे हैं। हाँ, पैसे का लोभ दिया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है हमारी फैमिलीज को कि केस विड्रॉ कर लें। कोई धमकाया इसलिए नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको अरेस्ट क्यों ना किया जाए। मैडम 6 महीने में कोई नहीं धमकाया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अरेस्ट करेगी तो पुलिस करेगी, इनके कहने से कोई अरेस्ट नहीं होगा। अगर उसमें तथ्य सामने आए तो पुलिस इनको अरेस्ट जरूर करती। अगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, चार्जशीट शामिल कर दी, तो अब तो गवाही चलेंगी, गवाही का वेट करें और ये साबित करें कि ये गिल्टी है। वो साबित करेगा मैं गिल्टी नहीं हूं। अब तो एविडेंस काम करेंगे, मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। Yashovardhan Azad, Mr. Rakesh Singh there has a point that there is a charge sheet that has now been filed. The matter is in court, and you know any amount of charges and counter charges will not make any difference right now to the way the case proceeds. But we've seen this on multiple occasions about how India's criminal justice system works. Tariq pe tariq, tariq pe tariq, tariq pe tariq. So I mean, you know, I don't know if I'll still be a news anchor when this case will finally be decided. Very, very true, Shreya. And that's exactly why I said a lot of things needs to be done even now. And of course, I'm not able to understand the logic of my previous speaker because, you know, on one hand, you're saying not to arraign Brij Bhushan Sharan Singh before the court takes cognizance. But on the other hand, you're already blaming the complainants that they're charged politically and that's why they're making false charges. So, I mean, this is something not done. Anyway, the most important point, Shreya, which I'd like to point out is that this case has made a joke of our system. You know, if a complaint has to be seen in terms of its sensitivity, and if it's against women, it's committed by the government that speedy action should be taken. So, and to tell you about the oversight committee, I think the oversight committee did a very, very serious job. They took the meaning literally by overlooking the incidents. That is why it was called the oversight committee. And that's why nothing came out. In this case, now you need a prosecutor, a special prosecution team, which will pursue a special court immediately. Number 3, hearings which should continue on a regular basis. Number 4, witness protection. And therefore, it is very, very important now because the kind of exhibition of you know by the state instruments that this needs to be monitored by a high court. And I think this is extremely important only for the reason that the man is very, very powerful and he may influence the investigation if he is not in judicial custody. Shreya. जगमती जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं कि ओवरसाइट कमेटी ने अपने जो नाम है उसको बहुत सीरियसली ले लिया और सब कुछ ओवरसी कर दिया, मतलब कि देखा ही नहीं जो देखना चाहिए था। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है जगमती जी, ये जो ओवरसाइट कमेटी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ये तो 6 लोगों की कमेटी थी। इट वाज हेडेड बाय मेरी कॉम।
लेकिन इस कमेटी, ये जितने 6 लड़कियों के चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में डाले हैं एंड हैज फाउंड द मैन लायबल ऑफ पनिशमेंट, ये सारे चार्जेस तो ओवरसाइट कमेटी के भी सामने रखे गए थे। लेकिन ना ओवरसाइट कमेटी ने हमें ये बताया कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं। ये भी हमें नहीं बताया कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। और ये तक नहीं कहा कि एटलीस्ट इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप दीजिए जांच के लिए। तो आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओवरसाइट कमेटी के बारे में बोलेंगे क्या? कमेटी तो बन गई लेकिन कमेटी ने कुछ काम नहीं किया। Yes, you are right, Shreya. And as Yasho also said that it was overlook committee, and I want to say that it was overhide committee in a way. They have not pointed out about the sexual harassment which was going on and which was reported by these wrestlers in front of this committee. And maybe they are very well-known faces of our sports arena, but I feel they should be held accountable at appropriate level. Why they have not done their duty sincerely? They have exposed the whole system in front of world in a way, and why they have not commented on this aspect at all, and why they delayed the report for 4 months. Maybe it's PT Usha, Mary Kom, and many other Babita Fogart herself was there. She has not written the dissent note if she was not agreeing with the committee report. So in a way, it's highly shameful on their part, and they have these sports women have in a way betrayed the Olympians of our country. So I personally wrote a letter to PT Usha that because she is my contemporary sportswomen. We were there in Asia 1982, and I sent the email, and I'm so disappointed on her response that she did not even acknowledge the mail that I sent to her, expressing my concerns and requesting her effective intervention in this whole matter. So, Shreya, this has been really unfortunate on their part, but yes, accountability should be fixed over there also. Accountability needs to be fixed at every level here, because this story has exposed too much rot in India's sport. And as I said, there are only two situations. Either the girls are lying or Brij Bhushan Sharan Singh is lying. Either he is a molester and a stalker or he is not. Right now, it is the word of 6 women wrestlers against this one BJP MP. The matter is now in court, but we know how things function in this country. It's Tariq pe Tariq, Tariq pe Tariq. Will the wrestlers get justice? Or will we finally know who's telling the truth or not telling the truth? We know this story will continue for a while now. As I said, we know how the system and how our courts work. We'll leave it there for the moment. Thank you very much for joining us, Mr. Rakesh Singh, for putting up a spirited defense for Brij Bhushan Sharan Singh. Jagmati Sangwan, thank you very much. And Yashovardhan Azad, thank you very much as well. I'm slipping into a quick break on the show. There's much more news coming up on the other side. Do stay with us.